Okay, good morning everyone and welcome to the live trading. Today is 24th of July and it is 10:34 right now. And if you actually look at it, अभी आप देखोगे तो ये टाइम है 10:45 to 11 o'clock. देखिए ये कैंडल या दो कैंडल इधर उधर भी हो सकता है. So what has happened, if you see, market has been in this particular range in the morning for the first 1 hour, and it has moved a little bit higher. Now we need to see if it is going to sustain. ये sustain करेगा नहीं करेगा देखना पड़ेगा. So if it can sustain, then up move is possible. If it cannot sustain, then from here price can actually come down. Okay, so that is very important right now. We are at a very important level. तो ये अभी के लिए we have to just wait and see. That is why I had told you 19,700 is important. It can actually give you a bounce here. 19,800 is where the resistance is there. So let us see. This is where actually the market is positioned at this point of time. We have got a resistance here. Now let us see whether it will take resistance or whether it will break this resistance. Because right now, this is the immediate resistance which is there. So let's see. And in case of Bank Nifty also, if you see, it took resistance here, it took resistance here. Now it is somehow holding. Let us see if it is going to take a resistance here, then actually we will see some momentum which is going to come. Overall, if I have to look at the market advanced decline is looking okay, but Reliance is down, Kotak Bank is down. Here we don't have any other heavyweights. Infosys was there, that is gone now. So if I have to see, there is no heavyweights in the upside here. There is heavyweights in the downside. And let us look at the overall advanced decline is okay. And let us see the option chain. Option chain को देख लेते हैं. ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए अभी के लिए तो call writers are very strong, but call writers are strong at this level, which is at 19,800 level. Abhi put writers are still strong at 19,700 and 750. तो देखते हैं कहाँ तक actually लेकर जाएंगे. Let's see. And let's look at Bank Nifty. Bank Nifty का भी देख लेते हैं. So as long we hold 19,700, ठीक है. 19,800 per we have a resistance which is there. Bank Nifty as per the option chain is much more stronger, but that is what is showing some weakness. So for Bank Nifty, 46,000 is the most important level. As long we hold 46,000, it is fine. If it fails to hold 46,000, that is where the problem will start. तो देखते हैं कि क्या होगा अभी. And if I look at the option chain, देखिए यहाँ पर most important level है. This is 19,800 का call option, sorry, put option. 90 rupees is the most important level here, and it has to start moving beyond 110. Then we can probably look for a buy here. And for Bank Nifty, 450 is important level here, and it has to start going above 470. This is 46,500 call option, put option. And if I look at the overall thing, this is just a short covering which has happened right now. There's no much volume in this. यहाँ पर कुछ भी market कुछ भी कर सकता है, because the volumes are quite thin.
तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है बाइंग में या सेलिंग में. देयर इज नो बिग वॉल्यूम एनीवेयर. तो लेट्स सी. अभी टाइमिंग जो है अभी आ रहा है 10:45 to 11. इट इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ. तो देखते हैं अब वो जो 10:45 to 11 o'clock, दैट प्राइस लेवल विल बी इम्पोर्टेंट. एंड हमारे लिए यहाँ पर 19,770 is important. So this can actually act as a resistance. नीचे के लेवल पे देखिए 19,720 730 सपोर्ट के काम कर रहा है. तो वहां से एक्चुअली अगर ये टूटता है 19,700, then actually we can see some good momentum on the downside. Yeah, पर if you look at Bank Nifty also, Bank Nifty is somehow holding here. So let us see. Bank Nifty, the day high is 148. So the first 1 hour high, this has actually got breached. Now, if suppose, see, there is a concept in order flow analysis which is called as failed auction. So if suppose we can't move higher from here, and if we start going down, uh, or if we get into a range also, then there is all the possibility of a reversal coming up here. So let's see. Our time is actually about to start now. And what will happen in this time is the most important thing. So as long we stay below 19,770, it is like supposed to be negative. And for Bank Nifty, here the important level was the level. The Bank Nifty has to go below 46,000. Till then, actually, it is a little challenge only. But let us see what it will do here. Or Bank Nifty, I will have to check the. 1 second. Let me check the immediate level. $46,080 is important in case of Bank Nifty for us. So let's see 46,080 if it can hold. As long as we can hold 46,080, this is positive. As long as this is holding 19,770, it is positive. Let's see what option is doing. Option trying to take support here.
अभी 10:45 से हमारा मेन टाइम शुरू हो रहा है. So the high and low of that candle becomes important for us. The market can get into sideways zone here, or it may actually start coming down. Any of the things is possible here at this place. If reversal will come here, things will be very, very strong, and if it breaks the low, then actually the momentum will pick up. वरना एक्चुअली नीचे तक एक्चुअली जाएगा, यहाँ पर फिर से अटकेगा. It can get into sideways. Only when it breaks the low, then only you will get the momentum. Same thing applies for Bank Nifty. So Nifty has to go and sustain below 19,700, and Bank Nifty has to sustain below 45,900. अगर ये होता है तो you can see a good amount of sell off in the market. अगर नहीं होता है तो मार्केट शायद साइडवेज रहेगा. पॉजिटिव के लिए बैंक निफ्टी हैज टू होल्ड 46,000 and Nifty has to stay above 19,700. तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है पॉजिटिव साइड में. And you can see exactly at our time it is giving us some selling. Let's see, इसको continue होना पड़ेगा, then only we have confirmation. And let's see, यहाँ पर कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है, so there's no big volume, so can't actually expect any major thing to happen here. So it can be slow and steady, and maybe in the second half only we will see some major movements which is going to come. As of now, it is taking some resistance, but ये resistance को it has to sustained actually selling आना चाहिए. जब तक सस्टेन सेलिंग नहीं आएगा तब तक एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही है. See, overall right now what is happening,
इफ यू लुक एट दिस, आप देखो यहाँ पर मार्केट ने पूरा ऊपर चला गया। मार्केट ने एक्चुअली जब स्टार्ट किया है, यहाँ कहीं पर स्टार्ट किया है ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पर जो भी लोग थे जिसने एग्जिट नहीं किया ये तो फंस गए। एंड यहाँ पर एक्चुअली अगर किसी ने और एक्चुअली ज्यादा बाइंग किया, एवरेज किया, जो भी किया है, वो भी एक्चुअली फंसे हुए हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे ही आया है। एंड इफ यू लुक एट द ओवरऑल फॉर द एंटायर वीक, पूरा हफ्ते का आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द होल वीक। पिछला पूरा हफ्ता का लेवल है। तो ये जो लेवल अगर टूट जाता है तो अच्छा खासा सेलिंग आएगा। देयर कुड बी अ गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग अगर ये टूटता है तो। जब तक नहीं टूटेगा तब तक एक्चुअली कुछ बोल नहीं सकते। एंड यहाँ पर यू कैन प्रोबेबली ऑल्सो सी a head and shoulder has actually formed here। इसको थोड़ा बड़ा ही रख देते हैं। ये एक्चुअली आपका हेड है और ये आपका शोल्डर बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये एक्चुअली टूटेगा तो मिनिमम 200 to 300 पॉइंट्स का एक्चुअली फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। बट इसको टूटना पड़ेगा और उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। 19,700 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैन नंबर। सो उसके नीचे आएगा तभी एक्चुअली ये सारा चीजें होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और रिस्क देखो, इफ आई हैव टू सी हियर, दिस इज व्हाट आई हैड टोल्ड यू। 94 का मैंने आपको, 90 का एक्चुअली मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था, सॉरी सपोर्ट बताया था। 110 एंड 127 मैंने आपको बोला था, 19,800 वाला फुट में। तो इसको नाउ इट हैज टू गो अबव 110, मिनिमम 110 के ऊपर अगर ये स्टे करता है तब एक्चुअली हम इसको बाई कर सकते हैं। इट हैज टू स्टे अबव 110। एंड दिस वन 450 मैंने आपको बताया था, 450 के 440 450 एग्जैक्टली यहीं पर एक्चुअली इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है। तो नाउ इट हैज टू स्टे अबव 500। 480 से ही स्टार्ट होता है बट इट हैज टू स्टे अबव 500, देन एक्चुअली ये 46,500 वाला पुट है। तो लेट्स वेट, अभी भी एक्चुअली कुछ खास नहीं है। देखते हैं 482। See, it has to actually not make any new highs and अभी यहाँ पर थोड़ा सा it has to get into a sideways kind of a trend, तब एक्चुअली यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। ये जो कैंडल है इसको खत्म होने के लिए अभी 7 मिनट बचे हैं। द लो ऑफ दिस कैंडल, इसके नीचे हमको सस्टेन्ड मूवमेंट आना चाहिए। अभी दिस द लो हियर विच इज मेड इज 19,765। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल आप एक्चुअली 19,750 मान के चलिए। इफ इट स्टार्ट स्टेइंग बिलो दैट देन यहाँ से नेगेटिविटी आ सकता है, फिर से डे लो पर जाने का कोशिश कर सकता है। देखिए ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर कुछ खास नहीं है, कुछ भी बाइंग नहीं है, सेलिंग ही है एक्चुअली। आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग है बट वो भी नेग्लिजिबल है। सो ओवरऑल आई डोंट सी एनी मेजर थिंग विच इज देयर। कोई बाइंग नहीं हो रहा है एंड सेलिंग भी अभी उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो क्या है कि लोग अभी होप में बैठे हुए हैं, अगर ये टूटता है तो एक्चुअली शायद वॉल्यूम आएगा, वरना इसको टूटना पड़ेगा अबव 19,850। जब तक ये नहीं करते हुए ये एक्चुअली साइडवेज ही है।
एंड यहाँ पर भी इट हैज टू गो अबव द हाई ऑफ दिस, या इट हैज टू गो बिलो दिस। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो इट इज ट्राइंग टू मेक समथिंग लाइक अ, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह बन रहा है। अगर ये बनता है, ये टूट जाता है, तो 500 पॉइंट एक्चुअली नीचे ये आ सकता है। तो इट हैज टू स्टे बिलो 45,900। एज ऑफ नो दोनों थोड़ा सा साइडवेज ही है, इतना खास कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा बहुत एक्चुअली जो भी उछाल आया है ना, दिस इज एक्चुअली नॉट वेरी स्टेबल, ये सस्टेन करना मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी a lot of buyers are trapped here. यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पर उछाल तो आया है बट इतना खास नहीं हो रहा है। So very important for bank nifty is it has to stay below 45,650 जो पिछला ऑल टाइम हाई था, वरना एक्चुअली वही से सपोर्ट ले सकता है। ये 45,700 बोला है, 650 700 यहाँ कहीं पर फिर से सपोर्ट ले सकता है। Okay. तो ये 110 के ऊपर बाई है विथ 90 एज अ स्टॉप लॉस, which is 19,800 put, and बैंक निफ्टी का 46,500 वाला पुट is a buy above for 507 के ऊपर ही बाइंग है, 510 के ऊपर ही बाइंग है। तो 450 यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, यहाँ पर नीचे आ रहा है, क्या बाइंग आया है? ये थोड़ा 110 के ऊपर एक्चुअली सस्टेन करता है तब बाई है। दिस हैज टू सस्टेन अबव 510। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुली एग्जैक्टली एट द सेम टाइम रिवर्सल आ रहा है? यहाँ पर टाइम नहीं था, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक्चुअली 9:15 पर टाइम था, इट हैज गिवन यू सम मूवमेंट, ये थोड़ा सा नीचे आया है, ऑलमोस्ट टिल 46,000 आया है, आप देख रहे हो। इसके बाद आप देखो निफ्टी का जो टाइम है उस समय पर ये भी एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है। देयर इज अनदर टाइम फॉर वीक्स, आई थिंक अराउंड 1 o'clock, 1:15 के आसपास। सो 1:15 1:45 पर एक्चुअली निफ्टी का भी टाइम है, 1:45 पर है, एंड 12:15 पर वी हैव बैंक निफ्टी। तो देखते हैं यहाँ कहीं पर ये टूट सकता है। See, जब तक एक्चुअली वी आर होल्डिंग 19,700 ऑन निफ्टी एंड 46,000 ऑन बैंक निफ्टी, ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा। एक बार वो टूटेगा तब एक्चुअली मूवमेंट आएगा मार्केट में। ना खास एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा है।
कि थोड़ा थोड़ा करके एडवांस डिक्लाइंस घट रहा है. So bears should take control very soon. फिर से ऊपर नीचे करता रहेगा, ऐसा एक्चुअली नहीं है कि ये नहीं करेगा. ओके, द टाइम इज डन हियर, सो इट हैज टू स्टे बिलो 19,758. तो आप 19,750 ही मान के चलिए, उसके नीचे इसको सस्टेन करना है. 19,770 is our resistance right now, and यहाँ पर देखिए 46,300 सब रेजिस्टेंस है, 46,080 सपोर्ट है. 46,080 के नीचे जाएगा तो ये 46,000 49,000 ये एक्चुअली ये सारा लेवल्स पर एक्चुअली जाएगा. इट हैज टू स्टे बिलो दिस. ये पिछले 2 दिन का एक्चुअली लो है, इस दोनों दिन का लो को तोड़ना पड़ेगा. इट हैज टू ब्रेक दिस, देन ओनली यहाँ से नीचे आएगा. तो यहाँ पर 45,700 तक आ सकता है. तो ये एक्चुअली फिर से सपोर्ट का काम करेगा, बाउंस आ सकता है यहाँ पर. तो अगर किसी का बाइंग था तो दिस वाज एन एक्चुअली एग्जिट फॉर यू. आपका कोई कॉल आपने लिया था तो ये एग्जिट था. एग्जिट आपने नहीं किया है तो आप फंसने का पूरा चांसेस है. अगर फिर से ये ऊपर को तोड़ देता है तो फिर से बाइंग है, वरना बाइंग नहीं है. देयर इज नो बाइंग. You have any questions, Varun? You have any question? The market may remain sideways. I think currently I will wind up the session if there's no questions. Yes, Varun, you have something to say? No, sir. Currently not. Fine then. Levels are there. I'll update you on the WhatsApp group. Okay, guys. Okay. See you then. Bye bye.